Initiative to participate, and of course a bigger thanks to their mentors. Some of the dishes were outstandingly good. It could give competition to any of those dishes in the 5-star hotels. So on the parameters, the bids have been done. Some plus minuses, but many positives you should be taking from them. कोई अगर नहीं टॉप 3 में आता तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप एक स्टेज पे आके परफॉर्म कर रहे हो, यू आर ऑलरेडी बेटर देन सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास. तो आप सोचो 250 में से किसी बच्चे ने पेपर दिया, कोई मिस हो गया, कोई रह गए, आप 6 बच्चे आगे आए हो इस लेवल पे परफॉर्म करेंगे. सो यू आर ऑलरेडी इन आई डोंट नो टॉप 1%, 2% पूरी क्लास के साथ में जो किचन में पार्टिसिपेट करते हैं. The mystery ingredients, the cooking techniques, the explanations were all good. A little bit more assuredness on your part to reply or to give answer or justification to the queries of the judges would have been appreciated. Overall, I would say अगर 6 के 6 बच्चों की परफॉर्मेंस हम मेजर करते हैं ऑन अ स्केल ऑफ 10, so I would say its average ranking is 9. So you can say at least 8 है और maximum 9.5 10 है, average 9 है. It was so good. So my best wishes to all of you. आप किचन में करियर बनाते हैं या कहीं भी मेहनत करें, मेहनत से ना डरे, और जो भी काम कर रहे हो, सीख रहे हो, देख रहे हो, उसकी रीजनिंग या जस्टिफिकेशन देखें. ऑल द बेस्ट. My name is Shivam Nair, studying in 6th semester of AHM Chandigarh. Today we had a Government Titans, which is the annual chef competition held every year for the 6th semester students. For my today's menu, I have prepared cold appetizer, hot appetizer, main course and a dessert. For my hot appetizer, I have prepared butternut soup with plantain pasta with croutons and edible flowers. For my cold appetizer, I have made raw fish mousse, which is basically tara maslata. It's a Greek cuisine dish served with asparagus and orange juice caviar. For my main course, I have prepared salmon moussak served with lemon babla, zucchini, butternut cuboid, and edible flowers and tuile. For my dessert, I have prepared a classic Mexican chili cake with my variation with strawberry jam and Tabasco in it, with a chocolate mousse and a almond crumble. Thank you very much. क्या है जो हार्ड है? Mousse. I would recommend you to eat with compote. Like you will feel the sweetness and the spiciness together. ये जो है टबास्को डाला हुआ है. Yes, it was my mystery ingredient. In this I use almonds and cashews. In this? It was a best substitute. Oh, sir. Do not order. Taco. Yes. वो भी जरा क्यों लग रहा है? Jerk chicken and banana. Coffee custard, lamb chop with red wine and chili sauce. Pulled jerk chicken क्या होगा? So basically I have marinated the chicken thighs with Jamaican spices and I've lightly sauteed them on the pan. I've completely cooked What them. is the Pulled part is we take 2 forks and we just scrape the meat. So Off it the becomes off the bone. Okay. And it becomes like shredded, like it seems like shredded meat. I'm asking Roasted it or I roasted it. because last week we had gone to this restaurant. One Eight Commune में था ये pulled chicken.
tried it. So since last 1 year I've been making beetroot puree, carrot puree. So I tried a new thing this time. I've made beetroot tartar. I've tried to imitate tuna fish with beetroot as it gives a little sweetish tint to the tartar with the vinaigrette of orange and mint. I've also given some tomatoes and orange pearls with it. Secret ingredients here. Secret tomatoes. Okay. Yes, sir. This is the cold start. Yes, sir. बीटरूट टाटा लिक्विड टाइप का जूस व्हाट इज ड्रेसिंग Vinaigrette. विनेग्रेट है Yes, sir. कौन सी वाली Orange. है Orange. अच्छा ये विनेग्रेट का बेस कौन सा ऑयल विनेगर Oil. रेशो कौन सी Olive oil. ऑयल इज टू विनेगर कितना 2:1. 2:1 कौन सा 1:1 2:1 3:1 3 होते ना विनेग्रेट ड्रेसिंग बढ़ना इसको टाइप्स ऑफ विनेग्रेट तो फ्रेंच होती है इंग्लिश होती है अमेरिकन होती है ये सब चीज़ें Good evening, everyone. My name is Kapish Dava. I'm a third year student of Dr. A.H. Ambedkar, Dr. Ambedkar Institute of Hotel Management. Today, we are participating in Gourmet Titans 2025 chef competition, and we are 6 participants, and we have been selected through merit basis. And today, I have prepared 4-course menu, which includes 1 hot appetizer, 1 cold appetizer, 1 main course, and 1 dessert. So coming to the appetizers, I've made pumpkin and lentil soup, which is a cold appetizer. Hot appetizer. I'm sorry. And for the cold appetizers, I've made deviled eggs, which is you can see right there. And in the main course, I've made fish cordon bleu. I've used sole fish, and for the starch, I've prepared turned potatoes and sauteed asparagus and baby corns. And I've used for the plating this carrot puree, and the sauce is parsley sauce mixed with bechamel sauce. Thank you. And this is cream and citrus bliss. I've used cream cheese and whipping cream with peach compote, and which is incorporated in this. And for the garnish, I've used mango glass charade with a hint of sweet paprika, which was my mystery ingredient. Thank you so much. मस्टर्ड या सॉस यूज़ किया आपने डिप यस सर एंड सेंटर में मोज़रेला के साथ तो डाला मैं लिया था तो ये जो आप प्रेजेंट कर रहे हो इट इज़ बेसिकली 1 पोर्शन सो आई थिंक द स्टार्टर इज मोर देन 1 अगर मैं ऑर्डर करता हूँ टीडीएच मेन्यू के हिसाब से तो 1 पोर्शन ये ऑल इज 1 पोर्शन है ना यस सर पोर्शन सभी बहुत बड़ा उसका तो बहुत बड़ा है 2 होती तो मेरे ख्याल में ठीक है My name is Rajat Marwaha. Today I've participated in the chef competition at AIHM. So firstly, to start with my meal, prepared in cold starter, prepared beetroot tartar. To imitate the tuna fish, I've used beetroot as the main part of the tartar. Then I've given avocado crema with the tartar and orange vinaigrette. Then
to go with the hot starter, I've given tortellinis, wild mushroom tortellinis. The stuffing is made from ricotta and mushrooms, and with the sauce, I've done sage butter sauce and parmesan foam. So going with the main course, in main course I've made mosaic chicken Wellington with mashed potatoes and thyme juice. And in the dessert, I prepared poached pears with almond crumble and ricotta cream. Thank you. कहाँ पे ऐड करें? Salmon sauce and incorporated in the veggies. आगे चलते सॉस की क्वांटिटी बढ़ा Very good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Garbanzo beans hummus, semi fish tacos, shepherd pie, काजू कतली चीज केक कोई कोर्स ब्रेक मिलेगा बीच में? तीनों आइटम ठा एक के बाद Let us start with this garbanzo beans hummus. This is hummus. This is made of kala chana, and sir, basically my whole menu is Indo-fusion menu, which I have. The basic ingredients are Indian, and it is inspired by world cooking, and therefore it is hummus, which inspired with Mediterranean. It is it's tortilla chips with some edible flowers and pomegranate seeds. Here I have made. नहीं be here. Okay. What is this beetroot sauce? Yes, sir. What beans have you used? So only kala chana. चने तो beans नहीं होते. Sir, the scientific name of kala chana and chickpeas is garbanzo beans. Cashew paste in it, and the crust. Normally we add butter, and I have added desi ghee and cashew, very finely crushed cashew. बेसिकली कैश्यू का पेस्ट यूज़ किया आपने तब जाके ये फ्यूजन आपकी जस्टिफाई हो गई है फ्लावर पॉट कहाँ से लाया सबसे पहले घर से बाकी सब छोड़ देते हैं अमेज़न मार्केट किधर कृष्णा साथ मिल जाएगा आपको 22 से मिल जाएगा 22 से 3 कृष्णा मार्केट में मुझे 22 से भी मिल जाएगा 22 से 3 का 22 से कहाँ से बूथ नंबर तूने कहाँ से लिया अब तेरे से पूछ रही हूँ 22 में 3 का सेट मिलेगा आपको हाँ हाँ सेट ही है कहाँ पे है Where in 22? शास्त्री मार्केट शास्त्री मार्केट. ठीक है बोल मैडम यूज के बाद 50% डिस्काउंट दे देंगे. यार मैं हाउस कीपिंग में बड़े दिनों से हूँ डोनट वाले ना 3 ये साइज के सेट में ही आते हैं अच्छे लगते हैं अगर तेरे को नहीं कुछ चाहिए अमेज़न पे भी है बिल के साथ मैडम को भेजो. अमेज़न पे भी है चल आ जाके चलो बढ़ाओ हॉट एपेटाइजर कोल्ड एपेटाइजर मेन कोर्स. pumpkin and lentil soup Kamal, executive sous chef, and chef Arya, the sous chef from Marriott Chandigarh, to the Gourmet Chef Competition 2025, where we celebrate the achievement of 6 outstanding participants who emerged victorious after successfully completing a challenging written test and a trade test for a few of them, amongst 27 students from the third year of our institute. आपकी एज का था तो मुझे ये पता नहीं था मुझे किचन में जाना है कि सर्विस में जाना है कि हाउस कीपिंग में जाना है कि फ्रंट ऑफिस में जाना है बट आप लोगों ने इतनी अच्छी प्लेटिंग की प्रेजेंटेशन दिया वो तो मतलब You've done a very good job. So keep doing more. एंड जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो साथ साथ बताई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी रखो कि मैंने अगर ये चीज़ बनाई है सो आई नो व्हाई आई हैव डन दिस है ना यू शुड बी एबल टू जस्टिफाई बाकी आई हैव बीन सीइंग सो मेनी शेफ कॉम्स आज की जो प्लेटिंग और सीजनिंग थी बहुत अच्छी थी इनवेरिएबली बच्चे सीजनिंग में मार खाते हैं बैलेंसिंग द टेक्सचर बैलेंसिंग द फ्लेवर्स वो गड़बड़ होती है वो इनफैक्ट सारी टेबल्स की अच्छी लगी मुझे सो दैट वाज गुड थैंक यू सो मच you cracked your written examination, your technicals were solid, practical you guys are so good. थोड़ा ऊपर नीचे है, but those things would be there. That's a learning actually, it's a part of your learning process. And I wish you all the best for the future. Thank you so much. Dhruv Rawat. Of today's competition is
perform at a semi